Hello students, Ncert solution chapter number 7 alternating current. Question number 7.9. According to this question, a series LCR circuit with R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry and C is equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? Question में हमें given है this LCR series circuit. This inductor, capacitor and resistor are connected in series with AC source of 200 volt AC. Right? तीनों को हमने सीरीज में ज्वाइन करके एक इस 200 वोल्ट AC सप्लाई के साथ ज्वाइन किया. And also given that when the frequency of supply equal the natural frequency of the circuit. इसका मतलब यहाँ पर ये दो फ्रीक्वेंसी कहता है इक्वल करने के लिए. एक तो इस सर्किट LCR की अपनी फ्रीक्वेंसी और दूसरा इस AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, दोनों को इक्वल कहता है. That is, this is the condition of resonance. And at resonance, phi is equal to 0, phase angle between current and voltage 0, and also Z is equal to R, that is total impedance of the LCR circuit is equal to R is equal to 20 ohm. Now, question में हमें find करना है average power. We know that average power for one complete cycle P is equal to E virtual into I virtual into cos phi. This P, average power E virtual into I virtual into cos phi. But this I virtual can be written as this E virtual upon resistance, because current is equal to voltage upon resistance आप जानते हैं, into this cos phi. Now on putting the values, E virtual is equal to 200. This is also 200 upon R. R is equal to this 20 ohm and phi is equal to 0. Then on solving this is 2000 watt. Then power consumed or average power transfer in the circuit at this given condition is 2000 watt. तो इस तरह से हमें इस सर्किट की एवरेज पावर ट्रांसफर इन वन कंप्लीट साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं. Now question number 10. A radio can tune over the frequency range of portion of million watt broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz. It is if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, then what must be the range? What must be the range of its variable capacitor? क्वेश्चन में कहता है ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी. दिस ब्रॉडकास्ट बैंड इज वेरी लार्ज, बट इसमें से हम केवल यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी का रेंज फ्रॉम 800 किलो हर्ट्ज टू 1200 किलो हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी रेंज हम यूज कर रहे हैं. एंड इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस, सर्किट में जो इंडक्टेंस है दैट इज 200 माइक्रो हेनरी. तो हमें कैलकुलेट करना है इस सर्किट के लिए रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर. सर्किट में कहता है कि रेडियो कैन ट्यून का मतलब रेजोनेंस होना है. सर्किट इन रेजोनेंस स्टेट है. एंड हियर गिवन दैट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 800 किलो हर्ट्ज and this 800 kilohertz can be written as 8 into 10 to the power 5 hertz, and second frequency is given 1200 kilohertz and this is equal to 12 into 10 to the power 5 hertz. Now L is equal to 200 microhenry. L is equal to 200 microhenry. This is 200 into 10 to the power minus 6 Henry or 2 into 10 to the power minus 4 Henry. Now सर्किट कहता है ट्यूनिंग सर्किट मतलब रेजोनेंस है. रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी. न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी.
on squaring both sides, then this C1 is equal to 1 upon 4 pi square into L into nu 1 square. राइट, तो इससे हमने ये C1 की वैल्यू कैलकुलेट की. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस 4 and pi, you know, 3.14, and this L inductance is given 2 into 10 to the power minus 4, and frequency, first frequency this 8 into 10 to the power 5, this whole square. वैल्यूज पुट करने के बाद ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस is equal to 197.7 picofarad. Similarly, C2 is equal to this 1 upon 4 pi square L into nu 2 square. Now on putting values, this 4 pi is 3.14 square. This L is equal to 2 into 10 to the power minus 4. And this nu 2 is equal to 12 into 10 to the power 5. This whole square. On solving, the value of C2 is equal to 87.8 picofarad. तो इस तरह से हम इस सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस या कहिए वेरिएबल कैपेसिटेंस का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें फ्रीक्वेंसी का रेंज गिवन था और सर्किट के अंदर इंडक्टेंस गिवन था. तो दोनों की हेल्प से हमने कैपेसिटेंस का रेंज हमने कैलकुलेट किया. तो रेंज मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू. This is from 197.7 picofarad to 87.8 picofarad.